Dear students, welcome to this class of mine. Today you will learn how to write a good job application. Imagine yourself that you are a PGT maths teacher and at present you are teaching the students of senior secondary classes in some school. You come across a classified advertisement in a newspaper for the post of a PGT maths teacher. That advertisement invites applications for this post. For your better prospects in future, you want to apply because you want a change in your job. You want to change the school where you are teaching at present. So you send your biodata to the principal of that school for his or her consideration. So here is an example how you will send your biodata for the same post. Before you start writing your biodata, you will have to write a short letter telling something about yourself. And you will write this letter in the form of a formal letter, self-address, then date, then designation and address of the addressee, then subject, then salutation, then you write the body of that letter, then polite leave taking. So, how you will write this letter? I am reading the contents of this letter. You try to understand these contents attentively. Write self-address in 2 lines, K33 LB Nagar, New Delhi. Then leave 1 line blank. Put date, for example 15 June and year. Leave 1 line blank. Then the principal, ABC School, Ankur Enclave, New Delhi. Leave 1 line blank. Then write subject. You will have to write the complete spelling of subject. Some students write SUB, short form of subject. No, that is not correct. Write the complete spelling. Application for the post of a PGT maths teacher. Then leave 1 line blank. Salutation. Sir, oblique, madam. If you don't know whether the principal is a lady or a gentleman. Now you will start writing the first para. How you came to know about this advertisement. You will give the name of the newspaper and the date of its publication. So how you will write? This is in reference to your classified advertisement in the Hindustan Times dated 10 June, year. I would like to offer my candidature for the post cited above. So, write this sentence in the beginning. Then leave 1 line blank. Then tell something about yourself in very brief. I have a proven track record of teaching students of senior secondary classes in public and convent schools and
therefore can assure you of much better results of your students in board examinations. Grammatical thing, when you write there in the middle of a sentence, always put comma before that and after that. I will leave no stone unturned to make them excel in this important subject. And leave no stone unturned, this is an idiom. What is the meaning? I will spare no efforts to give you the best result, I mean. Now the last para of this letter, third para. Please find enclosed herewith my complete biodata, which, comma, I hope, comma, will meet your requirements. You can call me for an interview at your convenience. Leave one line blank, yours sincerely, XYZ, and always write enclosures, yani which documents you are sending for his or her consideration. So you will send biodata. Second, you will write below this, because there was no space, so I have written in continuation, I mean. So below this one, you will write this second one, photocopies of relevant testimonials. Testimonials means documents, I mean, like certificates, etc. What kind of experience you have got with you. This is the way a covering letter should be written. We call it covering letter. So before writing your biodata, you will write this letter in very brief, right? Telling the source, how you came to know about this vacancy, ठीक है, right? You will give the reference of that newspaper, right? Then tell something about yourself. In the third para, you just make a request for interview. This is how a covering letter should be written. Dear students, आज आप ये पढ़ेंगे कि एक अच्छी जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है. सपोज इमेजिन कि आप एक पीजीटी मैथ्स टीचर हैं. आपने न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें वैकेंसी थी पीजीटी मैथ्स टीचर की, और आपने अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के लिए कि और अच्छा समय आया आपके टीचिंग पीरियड में, आपने डिसाइड किया अप्लाई करने का. फिर आप अपने विषय में लिखेंगे थोड़ा एक दो सेंटेंस की क्या आपका एक्सपीरियंस है, एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं. थर्ड पैरा में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट ये करते हुए कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए. फिर पोलाइट लीव टेकिंग. ये जो कवरिंग लेटर है जो आप बायोडाटा से पहले लिखेंगे, इसका वही फॉर्मेट होगा जो एक फॉर्मल लेटर में आप फॉलो करते हैं. सेल्फ एड्रेस, फिर डेट. हियर यू विल राइट द डेजिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. कौन है? द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल, अंकुर एंक्लेव, न्यू दिल्ली. दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. Then leave one line blank. Subject, application for the post of a PGT maths teacher. And always write the complete spelling of subject. ये इसकी abbreviation या short form use मत कीजिए. That is wrong. Write complete. SUBJECT. Leave one line blank. Salutation. Sir और मैडम दोनों लिखेंगे. आप नहीं जानते कि वो लेडी हैं या कोई जेंटलमैन है. फिर ये आप अपना कवरिंग लेटर लिखेंगे जिसके कंटेंट्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूं.
फिर भी मैं दोहरा देता हूं आपको समझने के लिए, आप समझिए. This is in reference to your classified advertisement in the Hindustan Times dated 10 June year. I would like to offer my candidature for the post cited above. ये आपने दे दिया रेफरेंस कि आपको कैसे पता लगा कि इस स्कूल में एक पीजीटी मैथ्स टीचर की वैकेंसी है. सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे? I have a proven track record of teaching students of senior secondary classes in public and convent schools and therefore can assure you of much better results of your students in board examinations. Here at present what you are doing, right? I will leave no stone unturned to make them excel in this important subject. ये leave no stone unturned, this is an idiom. जिसका मीनिंग है कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा सिखाने में कि वो और अच्छा परफॉर्म करें भविष्य में, तो उसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे. फिर लास्ट पैरा में आप लिखेंगे प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद माय कंप्लीट बायोडाटा व्हिच I hope will meet your requirements. You can call me for an interview at your convenience. As in when you want me for an interview, I will definitely come. Then leave one line blank, politely taking your sincerely or truly you can write. Then enclosures. First biodata, क्योंकि biodata आप भेजेंगे. फिर photocopies of relevant testimonials. Testimonials means documents, certificates, etc. ये जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट के नीचे आएगा. यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए इसको इसी के साथ कंटिन्यूशन में लिखा है. लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन में या कहीं भी आप जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं 1 2 3 करके लिखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, कौन कौन से फोटोकॉपीज भेज रहे हैं. तो इस तरीके से एक अच्छा कवरिंग लेटर उस बायोडाटा के लिखने से पहले लिखा जाएगा. Once your covering letter is complete, you will start writing your biodata. At the time of writing your biodata, you will have to keep in your mind which details are very, very important because you want to claim this post. You are very much interested in joining this job. So you will have to mention all those important details. For example, your name, date of birth, permanent residential address, then phone number with email ID, and the most important part will be academic qualifications. Here is an example of biodata. I will read out the contents of this example. Try to understand these details attentively so that you could be able to write a good biodata. Now let me read these details for you. On top you will write biodata, then name, for example, Rishi Mehta, date of birth 28/11/1987, permanent residential address for correspondence A15 GB Nagar Dehradun, telephone and email ID, this number, then email, and academic qualifications. Just to mention your academic qualifications, it will be very good if you make a box or a small chart, enumerating
in chronological order all the qualifications you have achieved. For example, serial number, class, name of the board, university, year, percentage. First, 10th. You did 10th from Central Board of Secondary Education, CBSE, year 2002-2003, percentage 96.02%. Then 10 plus 2, ditto, right, do, same, year 2005-2006, percentage 98.45%. Then BSc in maths, Delhi University, this is the year, then percentage. MSc maths, same, Delhi University, year and percentage. For PGT, MSc is important. Then B.Ed, you did from Punjab University through a correspondence course, year and percentage. These details are very important. These details should be very strong. Worth claiming this post. Then you will write experience. Taught maths at St. Mary Senior Secondary School from this year to this year. So in this way, a good biodata should be written. एक बार आपका कवरिंग लेटर पूरा हो गया है, उसके बाद अपना बायोडाटा लिखना शुरू करेंगे. बायोडाटा लिखते टाइम आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि उसमें कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी है. वो डिटेल्स बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप इस पोस्ट के लिए बहुत इच्छुक हैं, क्लेम करना चाहते हैं. तो एक अच्छा इंप्रेसिव बायोडाटा होना चाहिए जिसमें ऑल द डिटेल्स ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस प्रेजेंट होनी चाहिए. जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, फिर फोन नंबर विद ईमेल आईडी, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस देंगे, फिर प्रेजेंट अपॉइंटमेंट की वेयर यू आर टीचिंग एट प्रेजेंट, फिर उसके बाद सैलरी ड्रॉन, फिर सैलरी एक्सपेक्टेड, क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको इंक्रीमेंट पसंद करेंगे, सैलरी ज़्यादा चाहिए. फिर रेफरेंसेस देंगे, 2 व्यक्ति को जो आपको जानते हों, फिर आपके सिग्नेचर वगैरह. इस तरीके से एक अच्छा बायोडाटा आप तैयार कर सकते हैं. इसके कंटेंट्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, फिर भी मैं आपके लिए इनको दोहरा देता हूं. ब्रीफ में समझने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा बायोडाटा लिख पाएंगे. सबसे टॉप पर आप बायोडाटा लिखिए, फिर नेम लिखिए, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस जिस पे कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके, फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, जो कि आपको एक चार्ट या बॉक्स के थ्रू प्रेजेंट करनी है, जिसमें कॉलम्स बनाने हैं आपको. ये कॉलम्स होने चाहिए सीरियल नंबर, क्लास, फिर बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर आपका ईयर आना चाहिए कि कौन से ईयर में आपने क्या किया, फिर आपकी परसेंटेज आनी चाहिए. जैसे यहाँ है फर्स्ट 10th CBSE, दिस वाज द ईयर जब आपने CBSE किया, ये परसेंटेज थी. फिर 10 plus 2 डिटो, एब्रीविएशन फॉर्म है डिटो की, डू, CBSE से किया, इस ईयर में किया, ये परसेंटेज थी. फिर BSc मैथ्स ऑनर्स आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, इस ईयर में किया, ये परसेंटेज के साथ.
फिर MSc in Maths Honors from the same university, Delhi University. This year this presented. फिर आपने लास्ट में B.Ed भी किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी थ्रू अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स. ये ईयर था, ये परसेंटेज थे. ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस थे. अब आपने एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया एज ए टीचर. तो क्या था एक्सपीरियंस? taught maths at St. Mary Senior Secondary School from this year to this year. इस तरीके से आपको अपना बायोडाटा लिखना शुरू करना चाहिए. इसके बाद और भी डिटेल्स हैं जो मैं दूंगा, तो आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए, जिससे कि आप एक अच्छा बायोडाटा प्रिपेयर कर सकें. Present appointment. What is the meaning of this present appointment? You will tell which school you are teaching at present. This is important. You are a maths teacher in this school. Then the next detail is languages known. You will mention English, Hindi, Gujarati, or whichever language you know. That will be an additional qualification, minor in nature though, but you mention, I mean. Then the next detail, what salary you are getting per month. Here you have written rupees 35,000 per month. What salary you expect from this school? Do you want some increment naturally? For example, rupees 40,000, increment of rupees 5,000 per month. Then you will give two references of two personalities. Those personalities, those figures know you personally. If the principal of this school wants to know about you, wants to make some queries about you, then she will contact one of these two and ask about you. This is the reason you have to give two references. Then you will write, or you should write, I solemnly affirm and declare that all the facts mentioned herein above are true and correct to the best of my knowledge. That the facts you have mentioned in your biodata are correct and true, I mean. Nothing has been concealed thereof. And please, I tell you one thing, herein above, I have combined all the three. This is a legal word, or legal language, I mean. So, don't find any grammatical mistake here, right? Because these lawyers use this word, I mean, herein above, combined. Then, you write place, then date. You will write the same date, the date which you have written in your covering letter. Then signature of applicant. Now note, this is very important. Being a young student, there is no need to write your nationality, because you all are Indians, we all are Indians. There is no need to write religion, because it creates a feeling of division, not good for a young student. And then marital status. You have not crossed 20 yet, so it doesn't make any point about writing about marital status. So these three details should not be given. Once your education is complete, now you are looking for a job, you want to earn money for your livelihood, then you should write, or you will write these details. Otherwise, not necessary. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है
एक्सपीरियंस के बाद प्रेजेंट अपॉइंटमेंट। प्रेजेंट अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? प्रेजेंट अपॉइंटमेंट में आप देंगे कि इस समय आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि आप पर्टिकुलर स्कूल में, नेम ऑफ दैट स्कूल इज गिवन, आप मैथ्स टीचर हैं। फिर आप ये लिखेंगे नेक्स्ट डिटेल में लैंग्वेजेस नोन, जो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है, राइट? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और विच एवर लैंग्वेज यू नो, यू कैन राइट अबाउट दैट। देन सैलरी एक्स ड्रॉन, क्या तुम्हें इस टाइम पेमेंट हो रहा है पर मंथ, जैसे इसमें लिखा है 35,000। अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो लिखेंगे। आपने 5,000 बढ़ा के लिख दिया क्योंकि आप डेफिनेटली इंक्रीमेंट चाहते हैं, ये भी एक आपका इंटरेस्ट है कि स्कूल चेंज करना चाहते हैं। फिर आप लिखेंगे 2 रेफरेंसेस, 2 व्यक्तियों के जिन्हें आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल इस स्कूल की या प्रिंसिपल हैं जो इस स्कूल के, वो जानना चाहते हैं आपके विषय में कि आपने जो फैक्ट्स दिए हैं वो ठीक है या नहीं है। तो इनमें से, दोनों में से किसी एक को कांटेक्ट कर सकते हैं आपके विषय में जानने के लिए। तो इसलिए 2 रेफरेंसेस देना जरूरी है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे I solemnly affirm and declare that all the facts given here in above, जो भी आपने फैक्ट्स इसमें दिए हैं, डिटेल्स दी है, वो सारी आपके नॉलेज में है और सारी करेक्ट है। उसके बाद फिर आप प्लेस लिखेंगे जहां से ये भेज रहे हैं बायोडाटा। फिर डेट वही आएगी जो कवरिंग लेटर पे लिखी हुई है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। यहां एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आप अभी यंग स्टूडेंट हैं। यंग स्टूडेंट को नेशनैलिटी नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि हम सब भारतीय हैं। रिलीजन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक तरीके से ये डिवीजन क्रिएट करता है। यंग स्टूडेंट को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। थर्ड है मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं है। अभी तो आपने 20 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं अपनी आयु के, तो ये चीजें बेकार है लिखनी। एक बार आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आप सर्विस के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए सर्विस ढूंढ रहे हैं, उस टाइम आपकी एज हो सकती है 25, 26 हो। अगर उस टाइम आप लिख सकते हैं ये मैरिटल स्टेटस तो ठीक लगेगा। ये डिटेल्स है जो आपको बायोडाटा में लिखनी है, जिससे एक अच्छा बायोडाटा बनेगा। आशा है कि भविष्य में आप एक अच्छा बायोडाटा लिख पाएंगे। Just a thought to share. Are we doing sufficiently enough to rid our Mother Earth of all her diseases she is afflicted with at present? Nothing. Evidently nothing. Can't we make her as lively, as vibrant as she used to be some decades ago? Yes, we can, but we lack in our will and determination. Just act before it is too late, for her survival is our survival. Dear students, I hope you must have definitely found this video beneficial. If yes, then click and share it. Comment your thoughts below. Please don't forget to hit the button, subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update.